Welcome back, friends, to this edition of Biggest Story Tonight. The Enforcement Directorate conducted searches at the premises of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's personal secretary, AAP Rajya Sabha MP ND Gupta, in a money laundering case. As many as 12 premises in Delhi and the National Capital Region were raided. The money laundering case pertains to the alleged irregularities in the tendering process of the Delhi Jal Board. Meanwhile, the AAP has hit out at the BJP, calling the crackdown nothing but a witch hunt. Listen in. ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई। कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई। उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। All right, Piyush Ohri joins us live from New Delhi. Piyush, you have been on the ground covering these developments since morning. If you can tell us what's the status like now. We have seen the political slanging match between the BJP and the Aam Aadmi Party. But what are your sources telling you insofar as the Enforcement Directorate is concerned? How substantive are these charges against the Aam Aadmi Party MP who has been raided? So yes, Abhishek, when you are seeing that there is a contest between Aam Aadmi Party and BJP, it has been no less than dramatic. And in the recent days, what we have seen is that the slugfest has only intensified. And today, there was one more chapter which was added to this slugfest between the Aam Aadmi Party and Bharatiya Janata Party when Enforcement Directorate opened and began to investigate one more case of alleged scam in the Delhi Jal Board. And this, they have raided today the 12 premises, including that of Narayan Das Gupta, ND Gupta, who is the Rajya Sabha member of Aam Aadmi Party and also the treasurer of Aam Aadmi Party. Now, the Enforcement Directorate is checking and examining the alleged scam in which it has been alleged that how a tender of rupees 38 crore was given to a company fraudulently. Moreover, it has also been added that how there were automatic meters that were installed by a private company and the amount of money which was taken by this company in turn was siphoned off and it went into private hands. So the scam was first reported to anti-corruption branch and from there it has then landed to CBI and now subsequently to Enforcement Directorate. In fact, one arrest has also been made by the Enforcement Directorate in this case and subsequently now we are seeing that the raids are being conducted. So this is one among several probes now which has been conducted by the Enforcement Directorate, including the most hi-fi liquor gate probe in which the Enforcement Directorate is also trying to question Arvind Kejriwal, the petition of which now is going to be heard tomorrow in Rouse Avenue Court. So yes, this is the legal part of it, but the political part of it has been no less than dramatic. We have continued to see the political slugfest between the Aam Aadmi Party and Bharatiya Janata Party. But today, there was more drama which was added to it when there was a startling and there was a stunning allegation that was made by Atishi in which it alleged that how Enforcement Directorate was in a way trying to they were trying to demean the law by not having an audio-visual form of the interrogation they were committing. What we have heard from the Enforcement Directorate is that they are running or taking a legal route. So yes, you are seeing that all this kind of differences, all this kind of friction
which has developed between the Aam Aadmi Party, Enforcement Directorate, central agencies, and also Bharatiya Janata Party is only widening from here on. Back to the studio. Okay, thank you so much, Piyush, for that lowdown on what's really happened in this case, the position of the Aam Aadmi Party, the position of the Enforcement Directorate. Meanwhile, the BJP has hit back at AAP, saying any irregularities must be probed thoroughly. Listen into some of the reactions coming in from the BJP. ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं और अपने इस तरह से काम करती हैं। जहां पर कोई आरोप आते हैं उनकी जांच करना स्वाभाविक रूप से इनकी जिम्मेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी भी संस्था पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं होता है। जो उनका काम है वो उसको अच्छे तरह से कर रही हैं और ये देखने को इसलिए भी लगता है, प्रमाणिक लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जहां मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो लोगों ने, जैसे मोदी जी कहते भी हैं, उन्होंने अपने कल की स्पीच में भी कहा है कि देश के लोगों की संपत्ति को जिन्होंने लूटा है उनको इस देश के लोगों की पाई चुकानी पड़ेगी। उस दृष्टि से संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। पिछले 10 वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो संपत्ति है ऐसे लोगों की जब्त की गई है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अब तक अगर बोला जाए तो कई सारे लोग हैं जिनके घर ईडी की छापेमारी हुई है या ठिकानों पे, उन सब ने कहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, विच हंट है, सरकार एजेंसियों को इस्तेमाल करिए। इसका रिस्पॉन्स एमएचए कैसे देगा? देखिए, जो लोग, एमएचए की बात नहीं है, जो साफ दिखाई दे रहा है वो कह रहे हैं एमएचए की वो नहीं है। मेरा व्यक्तिगत ऐसे मानना है कि जिन लोगों पर आरोप है उन लोगों को जांच के लिए तैयार होना चाहिए, स्वयं ही आना चाहिए। अब ये कोई इस तरह की किसी कथा का प्रसाद तो नहीं कि सबको एक तरफ से बांट दिया जाए। जिनके ऊपर आरोप है उनकी जांच संस्थाएं कर रही हैं। आज आम आदमी पार्टी की कई नेताओं के घर ईडी ने रेड की और ये रेड दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले को लेकर है। मैं याद करा दूं दिल्ली के लोगों को, ये वही घोटाला है जिसको अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को काम दे रखा है और उसमें हजारों करोड़ रुपया वो लूट रहे हैं। वही कॉन्ट्रैक्टर आज भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर बदले नहीं। पहले वो कहां पैसे देते थे, आज अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों को वही करोड़ों रुपया मिल रहा है, हजारों करोड़ रुपया। और अब आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह रही हैं हम सवाल पूछते हैं। आतिशी जी, दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों ये पॉलिसी बदली, क्यों 2% से 10% और 7% से 12% शराब के कॉन्ट्रैक्टरों को काम देने के लिए पॉलिसी को बदला गया? क्यों जिन मित्रों को इन्होंने काम दिया उनके चलते 2783 करोड़ रुपए का दिल्ली की सरकार को नुकसान हुआ और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को बहुत करोड़ रुपए का लाभ हुआ? क्यों अभी तक आप इस बात का जवाब नहीं देते? मनीष सिसोदिया जी की जमानत के दौरान जिस तरह से 378 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की सामने आई, उस पर आप आज भी जवाब क्यों नहीं देना चाहते? जवाब इस बात का दीजिए कि क्यों संजय सिंह जी ने एसपीवी बनाकर शराब का काम लिया, शराब घोटाला किया? इन सभी सवालों के जवाबों की बजाय आप उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग समझ चुके हैं आतिशी जी, अब आपको जवाब देना होगा। ये शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड के घोटाले में वो कॉन्ट्रैक्टरों को क्यों काम दिया गया जिन्होंने करोड़ों रुपया पहले भी सरकारों में कमाया और अब भी हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का लूट कर ले जा रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बातें बदलने, इधर उधर की बात बदलने से बात नहीं बदलने वाली, जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे लगता है जो ईडी डिपार्टमेंट होता है, सीबीआई डिपार्टमेंट होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है और ये डिपार्टमेंट मतलब ये काम करने के लिए होता है। जैसे ईडी डिपार्टमेंट होता है कि जहाँ अनियमितता दिखाई देती है, जहाँ ज़्यादा पैसा कमाने की भूमिका होती है लेकिन इनकम टैक्स नहीं भरा जाता है और कुछ मुद्दों पर मतलब ज़्यादा कीमत वाला कोई प्रॉपर्टी बहुत कम पैसों में ली जाती है, ऐसे कुछ तालमेल होते हैं। और इसीलिए जब ऐसे पेपर ईडी के पास जाते हैं तो ईडी उसकी इंक्वायरी करती है। ये सर अरविंद केजरीवाल जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं, मूवमेंट से वो आए हैं, अन्ना हजारे के मूवमेंट से वो आए हैं। अभी 2-3 बार दिल्ली के 2 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। लेकिन कानून सबसे बड़ा होता है, मतलब कानून मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो या कोई भी हो, जब इसी तरह की इंक्वायरी अगर ईडी कर रही है और उसमें लिकर के मुद्दे पर जिस तरह उनके डिप्टी सीएम भी अंदर गए हैं और ईडी में मतलब लिकर में दिल्ली में घोटाला हुआ है, ऐसे मुद्दे बहुत सारे सामने आए हैं और इसीलिए मतलब उसमें उनका भी नाम आया कि एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी भी जिम्मेदारी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर उनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप पर उन्होंने Moving on to another big story that panned out through the day. The Uttarakhand Assembly introduced legislation on the Uniform Civil Code, becoming the first state to be choosing to do so. Chief Minister Pushkar Singh Dhami, at forefront of this move, said that the proposed UCC will not only be for the good of all sections of society, but also align with Prime Minister Narendra Modi's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Ek Bharat, Shresth Bharat. The Republic has also accepted the draft, which has been bifurcated in 4 parts, which is marriage, succession, live-in and miscellaneous. But the opposition is back at playing politics. Let's listen into some of the voices that came in by way of reactions to the development through the day. यूसीसी का को प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, हमने कहा उसको प्रस्तुत कीजिए, लेकिन चर्चा के लिए हमें अगले दिन नियत कर दीजिए। इतना समय होना चाहिए माननीय विधायकों के पास जिससे कि उसका हम अध्ययन कर सकें, परीक्षण कर सकें, क्या बिंदुवार हम उसमें देख सकें, क्या खामियां हैं, क्या उसमें कमियां हैं। लेकिन सरकार समय देने से इनकार कर रही है, कतरा रही है और आज ही प्रस्तुतिकरण करना चाहती है, आज ही वह पारित कराना चाहती है। समान नागरिक आचार संहिता उत्तराखंड सरकार ने लाने का फैसला किया है जो आज पेश हुआ। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ, पूरा देश इसका स्वागत करेगा और मुस्लिम महिलाओं को 10 करोड़ जिनकी आबादी है उन्हें गरिमामय पूर्ण जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप उसको उसी विधि विधान नियमावली से संचालित करेंगे जिससे सामान्य तौर पर विधानसभा का सत्र संचालित होता है। प्रश्नकाल होगा, लोक महत्व के प्रश्न उठेंगे और फिर विधेयक इत्यादि जो आने हैं वो आएंगे। मगर यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। All right, from Uttarakhand to Chandigarh, Republic has accessed a video from the mayor elections that happened a few days back, where the presiding officer can be seen counting the votes polled for the post of mayor. It can be seen that the presiding officer counted all 36 votes. The same video was produced before the Supreme Court, and remember, the court slammed the presiding officer, pulled him up for not being fair. This happened yesterday, but this video shows that he counted 36 votes. It seems that there was an anomaly, and let's try to understand from Amandeep. He's joining us, or going to join us live from Chandigarh. He is joining us in 30 seconds is what I'm told, and we'll get an idea of whether what the presiding officer did, for which he was reprimanded by the topmost court of the country, and it's likely that the result of the mayor election of Chandigarh Municipal Corporation might change following those observations, and the fact that the Supreme Court still seized of the matter and is going to give a final verdict at a later date. Amandeep, I am told, has joined over the phone from Chandigarh. Amandeep, what happens next after the observations by the Supreme Court and this video? Is it likely that the result might change, a repoll might be ordered? And if yes, when is it likely to happen? Abhishek, now so far the situation is quite complicated. That the Supreme Court, which way to go? Just because they have clearly observed that the ballot papers has been defaced by a presiding officer, and in the observation they have clearly mentioned that presiding officer should be prosecuted. So one thing is very much clear, Abhishek, that the Supreme Court has observed that some manipulation has been done by the presiding officer, and that is the reason strong observation has been given by Supreme Court. But now, what would be next? This is the biggest question. Just because, Abhishek, 8 ballot papers has been considered as invalid, and those votes basically belongs to Aam Aadmi Party and Congress councillors. And now the Supreme Court may direct to repoll for the entire mayor elections, or they may consider
the invalid votes as a valid. So the situation is quite complicated, but Aam Aadmi Party is pressing for the repoll and the case against presiding officer Anil Masi. And in fact, they are saying that the repoll should take place under the observation of Punjab and Haryana High Court. The presiding officer should be appointed by the court itself, not from any political party or the UT administration. So this is a very complicated situation. In the first hearing, Supreme Court has given a very strong observations. So let's wait and watch what is going to happen in the next hearing, just because on the other side, the MC officials and the presiding officer, they both have to put their own side that what had happened, and in fact how it has been turned out, and either their blames are being valid. What is the side? What is the defense side? So let's wait and watch what is going to happen in the next hearing, just because Supreme Court is very strongly pulled up the presiding officer in the first hearing. Yes, Abhishek. Okay, fair enough. Amandeep, thank you so much. Obviously, everything hinges on the next hearing of the Supreme Court later this month, and it could have consequences for the Chandigarh mayor, but we leave it at that. Moving on, but staying with Aam Aadmi Party. They also held a candle march in Chandigarh demanding case against the presiding officer. This was following the Supreme Court observations, of course. Let's take a look at this report filed by Amandeep from earlier today. After Congress, now Aam Aadmi Party is hitting out on the roads against the BJP regarding the Chandigarh mayor polls and demanding a case, sedition case against the presiding officer and arrest of presiding officer. So here you can see they are rolling out the candle march on the roads with the demand, and in fact the flags and the candles and even the black putties on their faces is the symbol of the protest, just because earlier in the morning Chandigarh Youth Congress have staged the protest, and by the evening Aam Aadmi Party workers, including councillors and supporters, they all are hitting out on the road demanding the arrest of presiding officer for manipulating the ballot papers, for making the ballot papers fraudulently invalid. So here you can see that they are all out on the road, having flags in their hands, candle in their hands, and in fact the black putty on their faces to indicate the symbol of the protest also. So they are hitting out on the march. This is the candle march of Aam Aadmi Party. They all are councillors, supporters, leaders of Aam Aadmi Party from Chandigarh, and even they are saying that these protests will remain continued till the time presiding officer should not get arrested. And even Supreme Court yesterday pulled up the presiding officer, giving the observation that this was the mockery of the democracy, and presiding officer